will discuss the adrenal gland today. So basically this adrenal gland is on the top of the kidney. For example, consider that this is your kidney. I'm not good at drawing, but this is your kidney, and this adrenal gland is basically placed over here, like this. So this is your basically what? Adrenal gland, and this is your kidney, right? So basically this adrenal gland is divided into this. It's not a triangular, perfect triangular, but it seems to be like a triangular. So this is divided into basically two portions, this adrenal gland. If we talk about its portion, so this one basically known as adrenal cortex, and this one region is known as basically adrenal medulla, right? Now this adrenal cortex itself is divided into three portions, right? It is divided into three portions like this. This is the first one portion. Obviously I cannot color it over here right now, but this is the first one portion of this adrenal cortex. Here we have another portion. This is the second portion basically. This is the second portion, and we do have the third portion as well. Right? This is basically the third portion of this adrenal cortex, right? And the inner region is basically what? Medulla. So when we've divided these have particular names as well. This is G. This is a term to remember this, right? G, F, R. You can learn this by this technique. Now this first one is basically name is zona glomerulosa. The first name is basically what? Zona glomerulosa. Okay, wait, let me write in a more proper way so you guys can basically understand. So we have here zona glomerulosa, right? This term G. Then the second one is basically what? Zona fasciculata. The second region is known as zona. First is zona glomerulosa, second is zona fasciculata, third one is zona reticularis. Right? We have these three portions. Let me write it over here as well. We have these three portions. Zona glomerulosa, zona fasciculata, right? And then we have zona reticularis, right? Now if we talk about the zona glomerulosa, it releases mineralocorticoids. It releases mineralocorticoids. This is zona glomerulosa. If we talk about zona fasciculata, it releases glucocorticoids.
glucocorticoids. And this zona reticularis, basically it releases androgens both in males and in females. Then if we talk about these examples, so first of all, the example of mineralocorticoid is aldosterone. Aldosterone is what? Aldosterone is basically an example of this mineralocorticoids. Okay, remember the hormones of this adrenal cortex are all steroids. We'll be discussing this and in the hormones behavior and basically their chemical nature, but these are all corticoids. These all are steroids. Then this glucocorticoids include cortisol, right? Now if we talk about androgens are what? Basically these are released in male and females both. So in males it is what? Testosterone. But in female it is converted into estrogen. Testosterone will get released, but it will then converted into estrogen. ये estrogen के अंदर ये convert हो जाएगा. But there is a disease, there you can say there is a condition in which there is the excess release of these this androgens, like excess release of androgens in females. In females, but you see that condition is known as masculinization. What happens basically, the appearance of extra hair, the basically the stop of the menstrual cycle, and many other factors are included in this. So this is very important disease term, you can say, not disease, but there's a condition. So we were about to discuss today, we were discussing about zona fasciculata and zona reticular, zona glomerulosa as well in detail, but not now. We were discussing this medulla, like what is basically the work of this medullary region. Okay, for that you must know something about our brain. Consider that this is our brain, somehow this is your spinal cord, and here you have pons, right? And this is your heart. This is your heart. Obviously your heart does not look like this, but in order to explain you guys, I'm creating it like this. Okay, now this is your heart and there are some neurons. It will go over here, there will be synapse, there will be another like this, and it will release a hormone. It is basically release a neurotransmitter known as adrenaline or epinephrine, right? Adrenaline or epinephrine. Basically this is a condition in which your heart is beating so fast, your heartbeat has been increased. Now आपकी heartbeat क्यों increase हुई? Basically we know about two autonomic nervous systems, right? थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हमारे पास autonomic nervous system जो होता है, autonomic nervous system is divided into two basically regions. Parasympathetic, I guess you know about these. Parasympathetic and sympathetic nervous system. If we talk about this parasympathetic, this is released when you are relaxing, right? We use this as a term as eat and digest, like, right? But this sympathetic
आप इसको सिंपैथी दे रहे हो. इट्स ड्यूरिंग द emergency condition. It's due to emergency condition, which is fear condition, or you can say flight or fight. Basically there are 3 F. What are these 3 Fs? इसके अंदर कौन 3 F आएंगे? फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट. राइट, ये 3 कंडीशन इसके अंदर आएंगी. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? यू आर स्कैर्ड, यू आर स्ट्रेस्ड आउट. सो अब क्या करें? आपका हार्ट बीट विल इंक्रीज लाइक हमारा हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा उस वक्त. तो यहाँ पे भी यही होगा कि यू आर इन एमरजेंसी कंडीशन. और सपोज दैट दिस इज बेसिकली व्हाट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम कर रहा है. तो एड्रेनालिन यहाँ पे क्या करेगा? बेसिकली इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को, आपको इंक्रीज कर देगा. ठीक है, यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो गया. बट इसको कूल डाउन सो कौन करेगा? सो कम करना, इसके खुद के एक सेटल पॉइंट पे लाना. जैसे ना न्यूरॉन, ये न्यूरॉन आया, साइनेप्स बना, एक और न्यूरॉन आया और यहाँ पे रिलीज हुआ, और यहाँ पे ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा. नाउ हियर जो एंटागोनिस्ट काम करता है एड्रेनालिन और एपिफेराइन को जो हम बोल सकते हैं, दैट इज बेसिकली ACH, एसिटाइल कोलिन. सो क्या करेगा? रिलैक्स करवाएगा, डिक्रीज हो जाएगी आपकी हार्ट बीट. यहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विल वर्क ओवर हियर. ठीक है, इतनी बात क्लियर थी. आगे जब हम देखते हैं कि इसका अफेक्ट अब एड्रीनल मेडुला पे क्या होगा, कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेडुला, ये इनका आपका इनसाइड रीजन है. अब यहाँ से एक ही बेसिकली न्यूरॉन आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे I should make this some different color. Okay. This is adrenal medulla, right? अब यहाँ पे बेसिकली आएगा आपके पास न्यूरॉन, और ये डायरेक्ट इसके अंदर ही आ रहा है. यहाँ पे कुछ सेल्स है. अब ये न्यूरॉन इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और ये प्रोड्यूस करेंगे क्या? दिस विल प्रोड्यूस, इनको हम बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे एड्रेनालिन प्रोड्यूस होगा और नॉन एड्रेनालिन यहाँ पे बेसिकली वो प्रोड्यूस होगा. ये जाएगा और ये बेसिकली चला जाएगा हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर. ये जाएगा, ये ब्लड के अंदर जाएगा. अब ये ब्लड के अंदर क्या करेगा? अब इसलिए आपका एक्शन पढ़ते हैं इसका, कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का एक्शन क्या है. एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन. ठीक है, अब क्या होगा कि ये ब्लड के अंदर जाएगा और बेसिकली यहाँ पे ये एज एन हॉर्मोन्स रिलीज हुए हैं. मस्ट रिमेंबर दिस एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन बोथ दीज हैव डुअल फंक्शन. ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, तो ये हॉर्मोन्स भी हैं हमारे पास. तो ये एज एन हॉर्मोन्स जाएगा और हमारे पास जो हार्ट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो रहा था, इन सबका अफेक्ट इंक्रीज करेगा दूसरे ऑर्गन्स में के अंदर ये चीज़ें. अब जैसे पता है, आपने समझा कि आपकी एक इमरजेंसी कंडीशन आ रही थी, आपके सामने समझो एक डॉग आ रहा था, आपके अंदर क्या सिस्टम एक्टिवेट हुआ? आपके अंदर फाइट फ्लाइट ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया. योर हार्ट बीट विल इंक्रीज, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया. तो यहाँ पे क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है? एक तो पहले तो बस एड्रेनालिन रिलीज़ हो रहा है जो हार्ट पे एक्ट कर रहा है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ कर रहा है. और दूसरा क्या हो रहा है? आपका एड्रेनालिन रिलीज़ हो रहा है एड्रेनल मेडुला के पास,
जो कि इसके एक्शन को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा है। मोर ओवर हमारे पास जो दूसरे ऑर्गन्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे ऑर्गन जैसे बात कर लें, हमारे पास इंटेस्टाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये इंटेस्टाइन की बात करें तो इस पे फॉर एग्जांपल एक हार्मोन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ मैं रिलीज़ कर देती हूँ, समझें, ये ठीक है रिलीज़ होगा, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज़ होगा, यहाँ पे एड्रेनलिन होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज़ कर, यहाँ पे डाइजेशन को इसके स्टॉप करने आएगा, ये डाइजेशन को यहाँ स्टॉप करने आएगा, एड्रेनलिन यहाँ रिलीज़ होगा। तो एड्रेनलिन के यहाँ पे दो काम हो गए, मतलब हार्ट बीट को इंक्रीज़ करेगा, हार्ट पे जाके मेडुला से हमारे पास हार्मोन्स निकालेगा, जो हार्ट पे जा रहा है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बात याद रखिएगा। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों तरह काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो या हार्मोन भी है। हार्ट के पास जाएगा एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज करेगा। लेकिन ये जब हमारे पास इंटेस्टाइन के पास आ रहा है तो इसकी डाइजेशन कम कर रहा है। डाइजेशन जब आप फियर फाइट फ्लाइट के मोड में होता है, आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन नहीं होती, आपकी डाइजेशन रुक जाती है। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब ये वही एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जब यहाँ से रिलीज होंगे एड्रेनल मेडुला से, तो क्या करेंगे, इसके अफेक्ट को इंक्रीज करते जाएंगे। अब अफेक्ट जैसे बताए, आपके सामने से डॉग आ रहा था, ये तो नाउ यू नीड टू रन, योर बॉडी नोज दिस थिंग। उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस मसल, आपका स्कैल्पल मसल है, उसको क्या चाहिए, उसको ATP चाहिए। ATP कहाँ से आती है, ATP हमारे पास बेसिकली आती है कहाँ से, ग्लूकोज से प्लस ऑक्सीजन से। नाउ योर बॉडी नीड्स टू मेक ग्लूकोज। जब भी हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, हम कहाँ चले जाते हैं, हम उस लेवल में चले जाते हैं, हम ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर। इस प्रोसेस का क्या नाम है, इफ़ यू नो दिस प्लीज राइट दिस इन द चैट बॉक्स। और हम बोल सकते हैं ग्लाइकोजन को जब हम ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन, यहाँ पे हमें ग्रोथ नहीं करनी, तो हमारे पास जो टर्म आएगी उसको तोड़ देंगे, हम लिपिड कर देंगे, हम लिपोलाइसिस कर देंगे, हम प्रोटीन कर देंगे। जब हम एक नई सोर्स से हम तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये ग्लूकोज तो बस बन गया, अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन कैसे आती है, हम हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगे, हम हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम बस कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो गया। हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बेसिकली। और हम क्या बोलते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाती है। प्यूपिलरी क्या हो जाती है, डायलेशन हो जाती है। हमारे पास स्वेटिंग होती है, हमारे पास पाइलो इरेक्शन होती है। मतलब क्या होता है, हम पास हमें गूज बम्स आने लग जाते हैं। ठीक है, सो आई होप this all function of adrenal medulla is clear to you. If you have any kind of queries, you can ask me in the comment section. I'll be really glad to answer these. Now look at this book. मेरे पास हमारी किताब क्या बोलती है, चलिए। The adrenal glands are located just above each kidney. Each adrenal gland is composed of inner portion of the adrenal medulla and adrenal cortex. The adrenal medulla central part produces two hormones, epinephrine and non-epinephrine. Some adrenaline और non-adrenaline के दूसरे नाम्स भी हैं. In response to stress, the action of these hormones trigger alarm responses similar to those elicited by the sympathetic nervous system that I told you, helping to prepare the body for extreme efforts. Among the effect of these hormones and are an increased heart rate. अभी यहाँ पे ये बता रहा है कि इंक्रीज हार्ट रेट है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स भी होगी, एलिवेशन इन ब्लड ग्लूकोज, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू स्किन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अच्छा ठीक है, ये बात थोड़ी याद करनी ऐसी है कि ब्लड फ्लो टू स्किन रुक जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड मसल्स बिकॉज दे नीड टू पम्प, उनका काम है, अब इनको चाहिए।
The adrenal medulla is activated by the sympathetic nervous system, which prepares the body to respond to emergencies. ये emergency ही थी जब ये response हुआ. ये देख सकते हैं आप. This is your kidney and this is your adrenal gland. ये देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा 2-3 पोर्शन बनाए हुए हैं इसके. एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला. अच्छा ठीक है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. सो बाय बाय.